तो क्या हाल मेरे दोस्तों, वापस सबका स्वागत है वैम्पायर के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। यस, एग्जाम्स चल रही थी इसलिए थोड़ा सा बिजी था, बट वापस आ चुके हैं हम एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। अगर अब तक आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आया होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम वो लेडी से मिले, उसका ब्लैकमेल का वही चक्कर। हमें जाना है वाइट चैपल, जैसे आप मैप में देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हम पेम्ब्रोक हॉस्पिटल में हैं। हमें जाना है वाइट चैपल, एक पूरा नया स्टेट। अगर आपने मेरी बीस्ट वाली वीडियो देखी होगी, उस बीस्ट को मारने में हमारी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो हमें अब अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है कि ताकि आगे जाके जो भी कुछ फाइट्स आए हम उसके लिए प्रिपेयर रहे, बॉसेस को आसानी से फेल दे। तो उसी के लिए अब थोड़े से हम साइड क्वेस्ट करने वाले हैं आज। जैसे कि मुझे पता चला है कि ये जो हम इस स्टेट के सिटीजन से, ओके। अब देखो, द डॉग्स डॉग्स पे हम इन सब बंदों से मिले। अभी बहुत से बंदों से मिलना बाकी है, अननोन है। पेम्ब्रोक हॉस्पिटल के आसपास ये सारे बंदे हैं, इसको पता नहीं, हमने एम्ब्रेस्ट कर दिया। तो अब ये देखो, ये जैसे फटीक की बीमारी है तो हम इनको क्योर कर सकते, तो हम एक एक करके इन सबको क्योर करेंगे। और यहाँ पे हमारे साइड क्वेस्ट है। इसमें से अब हम करने वाले हैं बर्न आफ्टर रीडिंग। तो बेसिकली ये जो गॉसविक है, गॉसविक फैमिली, इसका घर पे हमें जाना है। कुछ मॉर्टिमर करके कुछ है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। लेट्स गो। अगर मुझे वहीं पे जाना है, यहाँ से टेलीपोर्ट मार लूँ, इजी रहेगा। लेट्स गो, चलो। मेरे पास फटीग है क्या? एक सेकंड देखने दो। फटीग आई थिंक मेरे पास है। एक सेकंड। फटीग फटीग फटीग, हाँ फटीग है तो सही। तो उसे ट्रीट करें या आने की बात करें? ट्रीट यार अभी कर देते हैं ट्रीट, चलो। उसे फटीग से ट्रीट कर देते हैं। फटीग की दवा है अपने पास, उसको ट्रीट करके फिर निकलते हैं। कहाँ पे ऊपर वो आगे सेट वहाँ पे। Good evening, Doctor. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Okay, yellow. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन काफी ज्यादा गिरी हुई है भाई। Goodbye, Mrs. Goswick. अपनी इसमें मेन्यू में ऐड हो चुका होगा आई थिंक। यस, रिकवरिंग। अब कौन कौन बचा है? ये भी है, हार्वी फेडिक, ये तो यही बाजू में पड़ा है। और डॉक्टर आइक्योड को भी देना है। थॉमस एलवुड, ये भी है, इसको भी फटीग है। वाह, 3 फटीग है। ओके, मिल्टन हुस को भी फटीग देना है। भाई सबको फटीग ही चाहिए क्या? इसको हेडेक चाहिए। हेडेक अभी तक हमें उसकी रेसिपी नहीं मिली है। तो फटीग के जितने भी है, कितने? 1 2 3 4 5 6, मेरे पास कितने? कहाँ पे गई फटीग? फटीग फटीग 7। चलो, इसको नहीं देना है ना? भूल गया भाई मैं। हार्वी फेडिक, ओके, पहले हार्वी फेडिक को देते हैं। हार्वी फेडिक यही पे, ये दुखती नस वाला। Good evening, Miss. Good evening, Dr. Reid.
चलो। Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reid. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Thomas. Good evening, Mr. Elwood. Evening. Soldier. Not really. I think you... As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Good evening, Milton. Good evening. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks, anyway. I'm quite busy, Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reid. We do not see you in surgery very often. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Brannigan. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reid. Thank you. Good evening, Dr. Reid. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reid. Thank you. क्या अच्छा बंदा है Goodbye, Mr. Chidana. छुड़ाना चंदाना है वो छुड़ाना ठीक है सब क्योर हो गए ये हेडेक का रेसिपी नहीं मिला सो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता सॉरी इसको भी चाहिए बट पता नहीं ये कहाँ पे है आई थिंक वो डॉग्स पे जाना पड़ेगा इसके लिए मुझे वो बार में सो लिव इट अभी हम सीधा जाएंगे अपने साइड क्वेस्ट में जो की है भाई ये आलतू फालतू के मार्कर बहुत लगाता हूँ मैं हाँ यहाँ पे चलो यार गाड़ी वगैरह दे देते तो देनी चाहिए ना गाड़ी वगैरह मुझे इतनी हेल्प करता हूँ एटलीस्ट एक साइकिल तो रिजर्व करता ही हूँ मैं तो ये इसकी की है ये देखो भाई 11 लेवल ये 10 वाले को मार सकती है 11 लेवल वाले ही परेशान करेगा और कौन है बस यही तो है मैं एक को स्टन कर सकता हूँ उसको बाद में देखते हैं पहले अंदर चलते हैं
यस, न्यू हाइड आउट। नाइस, अपना नया हाइड आउट बन गया भाई। चलो कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन। फटीग हम बहुत सारा बना सकते हैं, कोल्ड भी है, ये भी है, सेप्सिस। फिलहाल हम सेव करते हैं क्योंकि ना इसके लिए चाहिए। एक तो एनमेनिया करके एक है, वो बहुत ये करता है, शिलिंग्स, वन ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स। न्यू कलेक्टिबल, बेली बीस्ट, वेट सेकंड, वैम्पायर क्रिकेट, ओके। It's locked, all right. भाई इसमें तो बहुत तगड़ा माल मिलेगा। बहुत बड़ा घर है भाई। ग्राउंड फ्लोर ना, ग्राउंड फ्लोर बंद है, इतना भी बड़ा नहीं है मतलब। ठीक है, ये लेटर लो। माई डियर मदर, वेन यू फाइंड दिस लेटर आई विल बी गॉन। ओके, तो हमने जिसको क्योर किया अभी, उसके बेटे को, वो सुसाइड करने वाला था, ओके। और उसने ये लेटर लिख के रखा था कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरी माँ को ये लेटर पड़ेगा। बट वो ज़िंदा है, तो वो चाहता है कि वो जब तक ज़िंदा है उसके माँ तक ये लेटर ना पहुँचे, तो हमें ये लेटर उसको वापस करना है। In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. डोंट से, अब ये मुझे चॉइस देने वाले हैं कि तेरे ऊपर है, तू क्या करना चाहता है। ओह शिट, चूज व्हाट टू डू विद Mortimer Goswick letter, bring back the letter to Mortimer Goswick, give the letter। ओह शिट, क्या करना चाहिए। देखो, टेक्निकली अपना बंदा सही बोल रहा है कि उसमें उसको मरने लायक ऐसा कुछ उसने बोला नहीं है। यार मुझे ये खोलना है। It's locked. ये कैसे खोलूँ? It's locked. लेट्स गो। तो बस भाई कुछ नहीं बचा, चलो चलते हैं। कहाँ जाना है? वापस जाना है यार। डॉक्स पे हो आते हैं क्या? या ये कंप्लीट करते पहले। चलो ये टास्क लिया है वो कंप्लीट करते हैं। जाते जाते इनको मारते हुए जाना है। कहाँ गई है? भाग गए? नहीं, वहाँ पे एक सेकंड। Sir, step away! तुम्हारी माँ He's done for! क्या लगता है किसको देना चाहिए वो लेटर? I'm so tired. Will this shift never end? माँ को दूं या बेटे को? जा पूछ क्या? क्या लगता है दोस्तों, किसको देना चाहिए? माँ को, बेटे को? देखो, अपने मेरे हिसाब से माँ को दे देना चाहिए, है ना?
क्योंकि कोई थोड़ा ना अपना सुसाइड लेटर अपने पास रखेगा अगर तुमको पता है ठीक है तुम्हारे किसी दोस्त ने सुसाइड लेटर लिखा है तुम ये बात छुपा के रखोगे ऐसी चीज़ छुपा के थोड़ी ना रखोगे उसे घर वालों को तो बताओ देगा ना चलो माँ को ही दे देते हैं Good evening, Doctor. ट्रस्ट गया बाहर How में is my son doing? I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. बट ये चाहता क्यों है Why? बट ये चाहता क्यों है अपने आप को मारना क्यों Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say, Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. A better place? What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. I'm alright. Don't waste your time with me. He is lucky to have you. Prepare for the worst. You are in denial. क्या चूज करना भाइयों? He is lucky to have you. He's lucky to have you. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. चलो इसे ही दे देते. Your son asked me to find this letter, Mrs. Goswick. However, I thought it would be preferable to give it to you. I already know what I'm going to read. Mortimer, why are you acting in this way? I have done everything I can to help you, but it's not enough. We will talk about this letter later. I understand that you need some privacy. Before you leave, take this for your trouble. Thanks to you, my son still has a future. Perhaps. Thank you, 100 shillings. Thank you very much. Goodbye, Thank you very Mrs. much. Goswick. Thank you very much. I appreciate it. I appreciate it. हाँ भाई. Good evening, Mr. I'm okay. Your mother won't let you down, Mortimer. Don't you share her hope for a better future? No. I don't. Won't you even try? Do you want me to promise you I'll get better? Do you want me to tell her the same thing? I could, but it would not change anything. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you.
Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. Pain is precious tool. Despair a deadly poison. You are a lucky man. You are a lucky man. Despair is क्या भाई? You are lucky man. Don't you see how lucky you are? You're rich, you're in good health, and you have a loving mother. You're simply drowning in self-pity. Leave me alone then, Doctor, and let me drown myself. वाह भाई. Admit it more. Yeah, all right then. call it weak. I have to go now, sir. I'm all right. Don't waste your time with me. ये हेल्दी हो गया? हाँ हेल्दी है ये. तो आई थिंक अब इसमें हो जाना चाहिए ना. हाँ टास्क कंप्लीटेड सक्सीड रिकवरिंग हेल्दी. इसका अभी भी एक हिंट बचा है. हाँ कौन सा टास्क बचा है इसको? ये बचा है ना अभी. क्या है? रॉन्ग टारगेट. फाइंड द लोकल कमांड पोस्ट ऑफ द गार्ड ऑफ प्रिवेन. चलो एक बार इसके माँ से बात करें. एक हिंट बचा है. Good evening, Doctor. Goodbye, Mrs. Goswick. Don't waste your time with me. I will not let you down, my boy. चलो कहाँ पे जाना है अभी हमें? वाइट चैपल. उसी जगह पे जाना है. उससे पहले एक बार डॉकयार्ड आ जाए. एक बार डॉक्स जाते हैं. द डॉक्स. उससे पहले ना एक बार डॉक्स जाते हैं. आओ यहाँ पे चले. डॉक्स पे चलते एक बार.